What's up, everybody? Sorry. I know deadline stream 1 घंटे की होती है, but there was some technical difficulties that we were facing, but we are back and 30 मिनट भी नहीं 25 मिनट रह गए हैं for the deadline. And today we have two very special guests joining in. Baba unfortunately will not be joining us today, but we have Manan Bhai and of course Rakshit Bhai as well. व्यू स्पोर्ट बोल सकता हूँ ना मैं व्यू स्पोर्ट का इंटीग्रेशन बोल सकता हूँ ना फ्रॉम फैंटेसीपीडिया फ्रॉम फैंटेसीपीडिया ऑफ कोर्स फ्रॉम फैंटेसीपीडिया। तो अगर आपने फैंटेसीपीडिया को नहीं ट्विटर पे अगर आपने नहीं देखा है तो थ्रेड्स जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड लेट्स राइट डाइव इनटू इट गाइस। गेम वीक 22 इज हेयर इन ऑलमोस्ट 26 मिनट्स। क्या चल रही हैं फर्स्ट चीजें? तो मनन भाई, रक्षित भाई, फर्स्ट टेल मी लाइक आपकी क्या क्या रैंक है एंड लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द dilemmas that we have. वी शुड स्टार्ट विद द गाय हु हैज एन अमेजिंग रैंक जो है मिस्टर मनन. सो मिस्टर मनन प्लीज स्टार्ट. So काफी एक्चुअली अच्छा सीजन चल रहा है. I'm on around 76k ओवरऑल रैंक. मतलब बोला भी नहीं जा रहा है मेरे से because 76k टॉप 100k ब्रो. लास्ट वीक 50k था तो I had a red arrow, तो still 76-75k रैंक है and I'm quite happy. मैंने टोनी किया था प्रणय, मैंने देखा तूने भी टोनी कैप्टन किया था I think. So, you know like वो क्या कहते हैं Visionaries. OG minds think alike. Visionaries. I knew man. मैंने स्ट्रीम से पहले ही बोला था कि I just feel man like और उसने शायद उससे पिछले वाले गेम वीक में हैट्रिक भी तो मारा था उसने शायद अंडर तो मैं वो देखा, मैंने कहा यार this guy is cooking. I can smell something. I can smell something. I think he's cooking something. And that's why I went. But हाँ मनन भाई मतलब perfect man. quite happy and can't wait क्योंकि अभी इतने सारे डबल्स, ब्लैंक्स, चिप्स, तो एक्साइटिंग होने वाला है. थोड़ा एक महीना भी बोरिंग हो गया है फ्रॉम एन एफपीएल पॉइंट ऑफ व्यू, तो कांट वेट. रक्षित की भी रैंक वैसे बहुत अच्छी है. हाँ बस मनन से बस 2 लाख कम है. तो ही इज 70k, आई एम 2.7k, 2.7 lakh millions नहीं व्हाट 2,70,000. That's my rank basically. मनन से 2 लाख कम. 2,70,000. ओ भाई साहब. तो चलो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट पहले डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्स इज अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग फॉर द अपडेट फॉर हालैंड. तो रक्षित भाई, मनन भाई, एनी अपडेट ऑन हालैंड? नो अपडेट. बेसिकली इट्स जस्ट कि वो स्क्वाड में होंगे. Will he get minutes? I don't think so क्योंकि बोन फ्रैक्चर था. It's still I feel early, इसी वीक को ट्रेनिंग में आया है, तो I don't think personally कि हालैंड स्टार्ट करेगा. He might get 10-15 minutes off the bench, but you can wait another week, to bring him in. Let me guess your transfer, Pranay. Haaland in and captain. नहीं, I haven't gotten Haaland because I saw the मतलब मेरे को ये लग रहा था कि पिछला वाला गेम जो हमारा था उसमें शायद से we could have seen Haaland maybe even at 60-70 minute maybe warm his body up a bit, but he wasn't not even in the squad. मतलब वो squad में भी नहीं था. अगर वो bench पे भी होता तो I would have like made sense कि यार शायद वो होता. But I am probably for this particular game week I am holding my transfer. So अभी तो फिलहाल मैं नहीं जा रहा हूँ उसके लिए. Although like last game week ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं, मैंने पिछले स्ट्रीम में बात करी थी, 105 पॉइंट्स आए एंड द ओनली थिंग फॉर मेरी गेम वीक हिस्ट्री हैज बीन सरप्राइजिंगली वेरी वेरी गुड, क्योंकि मैं एक टाइम पे 6.6 मिलियन पे था. आई हिट द रॉक बॉटम एंड राइट नाउ इन द लास्ट आई थिंक 4-5 गेम वीक्स at this point I removed all my United assets like Bruno Fernandes, Højlund, and this is where I realized since then. And this is where I realized that the only way if I don't need red in my this arrows is if I remove the red players from my team. And Manchester is of course blue guys, so यहाँ से मैंने realize करा and I am currently at 1.7 million. So let's dive into it. Some questions मेरे पास आ रहे हैं धीरे धीरे. मैंने वाइल्ड कार्ड यूज करा है, कपिल बोल रहे हैं गलत डिसीजन तो नहीं है. नो ब्रो, अगर आपने पिछले गेम वीक में नहीं यूज करा एंड इफ यू आर रिग्रेटिंग दैट, because I used my wild card in the last game week and I'm super happy finally. पहले वाला wild card तो अच्छा नहीं गया था, but ये वाला wild card काफी अच्छा गया है. मतलब if I would say touch wood,
105 पॉइंट्स आए। एंड अगर आप अभी भी वेट डाउन कर रहे हो, बिकॉज साला की भी न्यूज आ रखी है, एज रक्षित भाई एंड मनन भाई, आई थिंक मैंने थ्रेड पे या कहीं पे पढ़ा था कि साला को भी अभी लाना इज नॉट वेरी वाइबल। और जो लोग होल्ड कर रहे हैं, तो व्हाई आर यू स्टिल होल्डिंग हिम? आई थिंक 13 Yeah. मिलियन, समवन हु इज नॉट इवन Hmm. गारंटीइंग यू पॉइंट्स, लाइक लेट अलोन की मतलब वो टीम में भी नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप उनको अभी के लिए हटा दें एंड प्रॉब्ली गेट सम मोर प्लेयर्स इन। सो Yeah. द ओनली थिंग इज कपिल की वाइल्ड कार्ड ऑब्वियसली आपने कर यूज़ कर दिया तो कुछ कर नहीं सकते, बट जिन लोगों ने नहीं किया है फॉर एग्जांपल, सो देयर माइट बी ए बेटर यूज़ इन द फ्यूचर बिकॉज बहुत सारे ब्लैंक गेम वीक्स और डबल गेम वीक्स आने वाले हैं। सो 25 फॉर एग्जांपल डबल गेम वीक है, 26 ब्लैंक, 29 ब्लैंक हो सकता है, 34 एंड 37 तो डबल गेम वीक्स मोस्ट लाइकली होंगे। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डबल गेम वीक्स, देयर विल बी अ लॉट ऑफ ब्लैंक गेम वीक्स। तो उनको नेविगेट करने के लिए मे बी वाइल्ड कार्ड लेटर इन द सीजन भी थोड़ा यूज़ कर सा हेल्प सकते हैं। कर सकता है। बट आपकी ऑब्वियसली टीम पे डिपेंड करता है। इफ़ यू फील कि आपकी टीम अच्छी पोजीशन में नहीं है तो यू कैन ऑब्वियसली यूज अ वाइल्ड कार्ड अभी भी। Yeah. प्रणय भाई म्यूट पे हो। कुछ कुछ क्वेश्चंस भी मैं ले रहा हूँ चैट से, व्हिच इज लाटन इज आस्किंग भाई ट्रिपियर स्टार्टिंग क्वेश्चन मार्क। ट्रिपियर स्टार्टिंग, शुड बी प्रोबेबल स्टार्टिंग, लाइनअप्स में तो है, हाँ हाँ, ही इज इन शुड द बी प्रोबेबल स्टार्टिंग, लाइनअप, शुड स्टार्ट, या या। हिज बाय एंड बट मूव फेल थ्रू, सो ही इज गोना बी एट द आई क्लब। थिंक, बट मनन भाई क्विकली, अगर ट्रिपियर स्टार्टिंग और नॉट स्टार्टिंग, न्यूकासल का जो फॉर्म है वो काफी ज्यादा वरीसम है, स्पेशली हम्म। हैविंग इन दैट प्राइस रेंज। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फर्स्टली आई जस्ट से कि ट्रिपियर इज नॉट अलेक्जेंडर आर्नल्ड। तो मतलब उतने प्राइस में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड न्यूकासल की फॉर्म भी देखें, तो आई वुड स्टिल बी वेरी डाइसी अबाउट इट। लाइक इज ही अ प्लेयर दैट यू शुड कंसिडर ब्रिंगिंग हिम इन टीम? व्हाट डू यू सजेस्ट? मतलब इफ आपके पास है और आपकी टीम में दूसरे प्लेयर्स को ट्रांसफर करना पहले जरूरी हो रहा है, तो आप वो करिए। बट अगर इफ यू डोंट हैव एनी ट्रांसफर टू मेक, तो आप इजीली उसको निकाल के अ प्लेयर लाइक वॉकर, जिसका डबल है इन 25, सिटी प्लेयर, राइट। मे बी ट्रेंट अगर आप अपग्रेड कर सकते हैं तो, क्योंकि शायद लिवरपूल का भी डबल हो सकता है इन 25। तो देन अगेन ये सारे ऑप्शंस काफी बेटर है, बिकॉज अगेन एज प्रणय सेड कि न्यूकासल का फॉर्म ही इतना अच्छा नहीं है, ऑल्दो उनके फिक्सचर्स काफी इंप्रूव हो रहे हैं। तो इट्स टू बी सीन कि फिक्सचर्स ब्रीड फॉर्म वाली चीज उनके साथ होती है नहीं। फुटबॉलर बोल रहे हैं भाई, शुड आई कीप केडीबी फोर्डन फॉर दिस गेम वीक? एब्सोल्युटली भाई, मतलब इसमें कीप तो देम फॉर नेक्स्ट 7 गेम वीक्स, 8 गेम वीक्स। हाँ भाई, मतलब जस्ट बट फोर्डन डोंट यू थिंक, डू यू थिंक ही इज अंडर परफॉर्मिंग हिज एक्स जी गाइस? ऐसा नहीं लग रहा कि आई that's a थिंक bad आई that's a bad आई एक्चुअली joke, मुझे वो थिंक that's a bad फील्ड टिल्ट देखना पड़ेगा थोड़ा पहले। that's a bad joke guys। नहीं नहीं, एफपीएल के बारे में बात करनी होगी, बट मतलब genuinely like FPL wise भी, do you think Foden is like, is he just having like a bad luck of fixtures or bad run of fixtures? Like what is happening with आई Foden? थिंक Because जब when we see him जब in the game, he's very good। या आई थिंक जब से वो नंबर मतलब सेंट्रली खेलने लगा है, बर्नार्डो ऑन द राइट, तब से आई थिंक काफी इम्प्रूव हो चुका है एज अ पिक फोर्डन, कि वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। तो आई स्टिल फील कि अभी विद केडीबी बैक एज वेल, ही माइट स्टार्ट थ्रू द सेंटर ओनली। आई लाइक फोर्डन एज अ पिक। मेरे स्पॉइलर अलर्ट, अभी के लिए वो कैप्टन है जब तक हमारे पास कोई लीक नहीं आता है, तो आई लाइक फोर्डन। म्यूट। प्रणय you're on mute. Sorry, Rakshan bhai, same, your Yeah, in answer fact, is I want also to the ask same? you as a City fan कि let's say मेरे पास जैसे both Alvarez and Foden है इस particular game week and I will captain a City player. So being someone जो City को regularly देखता है, who would you recommend captaincy wise, Alvarez या Foden? I think it's very tough to pick anyone, क्योंकि एक बार जब वो हॉलिंग स्टार्ट होती है तो वो लाइक आई डोंट हैव अ डेफिनेटिव आंसर इवन एज अ टीम। मतलब मैं तो टीम भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाता यार आज तक। जब से मैं गार्डियोला एरा में आया हूँ तब से मेरा आज तक, इवन आफ्टर सारा एआई ब्लॉकचेन करने के बावजूद भी, मैं गार्डियोला की 11 आज तक मैं एकदम बैंग ऑन प्रिडिक्ट नहीं कर पाया हूँ। बट टू आंसर दैट, आई थिंक इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई प्रॉब्ली थिंक आई वुड पुश फॉर अल्वारेज मोर, बिकॉज आई जस्ट थिंक कि मेरे को लगता है कि उसका रोल थोड़ा सा, although when he's playing alongside with Haaland, he's more of creator kind of a role में, Hmm. and
अल्वारेस से मेरे को एक चीज जो अच्छी और खराब और लगती है, which is that he's a bit not more selfish. मतलब in FPL you need player who are more selfish. You know, like he plays like, मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा, like he gives me some glimpse of Salah, you know, कि जब उसके पास बॉल आती है he's more of a creator kind of a thing, but sometimes he has to go selfish. मतलब वो चीज एक एज अ FPL पर्सपेक्टिव से वो चीज अच्छी नहीं लगती, बट हाँ, एज वॉचिंग सिटी एंड यू नो ही इज वेरी सेल्फलेस व्हेन यू नो ही इज क्रिएटिंग दोस चांसेस, बट आई थिंक पर्सनली मैं थोड़ा सा अल्वारेस के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा यू नो पुश आउट होऊंगा rather than थोड़ा सा फोर्डन को लेके, बट आई थिंक बोथ कैन स्कोर, मतलब दोनों ही स्कोर कर Yeah, सकते हैं। मैं I फटाफट currently have my captaincy on Alvarez only, so let's see. ओके गाइस, ऑलमोस्ट सॉरी प्रणय, एक सेकंड, एक न्यूज है कि शायद हालैंड वोंट स्टार्ट टुमारो, तो Oh, जस्ट केम इन, तो source? What अगेन is the source? lazy FPL, he has been wrong on one occasion out of like 15, so again take हाँ it with a लेजी pinch FPL of take it with a pinch of salt, but they just tweeted कि we believe Haaland might not start tomorrow, which is good for Alvarez obviously, because if he doesn't then Alvarez will start most probably, so yeah. राहुल गणेश, थैंक यू फॉर द कंट्रीब्यूशन भाई। मैंने देखा मॉडलिंग एआई एमएल यूज करके चिप स्ट्रैटेजी बना ली। ट्रिपल कैप्टन 25 गेम वीक, वाइल्ड कार्ड इन 30th गेम वीक, फ्री हिट इन 34, बेंच बूस्ट इन 37। देखते हैं काम करेगा तो डिस सब्जेक्ट हमारा। भाई ये राहुल गणेश भाई, मेरी सेम स्ट्रेटेजी है, तो मुझे बताओ ये कौन सा डेटा राहुल गणेश मॉडलिंग भाई का ने तो पूरा FPL क्रैक कर लिया ब्रो. मतलब He's done it. He's winning it. मतलब नेक्स्ट सीजन से आई थिंक इसके बाद राहुल आपका बस एक ही होगा कि आप हमारी जगह यहाँ पे होगे, आप ही FPL पंचायत के नए फेस होने वाले हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट भाई। जॉब खतरे में हम सबकी। Very सूर्य, good strategy. वैसे overall it's a good strategy. Yeah. इट्स अ वेरी सजेस्ट गुड, हाँ। ट्रांसफर्स फॉर माय। बस एक सिर्फ इसमें, अच्छा बोलो बोलो बोलो। जी हाँ हाँ मनन भाई, आपको नहीं, मैं उसमें बस बोल रहा था 30 की जगह अगर 31 वाइल्ड कार्ड करोगे तो वो बेटर है, क्योंकि सिटी एंड आर्सेनल फेस ईच अदर इन 30, तो थोड़ा सा वो एक नगेट था। Okay, suggest transfers for my team. Star ग्राम सभा, ओके, रैंक 6, हैव 2 फ्री ट्रांसफर। यार इस पे टीम पे जाना पड़ेगा, मैं तब तक टीम देखता हूँ, बट तब तक यहाँ पे डॉक्टर विनय वर्मा की एक और यहाँ पे सुपर चैट आई है। इसाक और सोलंके, कैप्टन साका और केडीबी। आई हैव वन क्वेश्चन ईच फ्रॉम रक्षित भाई एंड मनन भाई, तब तक मैं इनकी टीम निकाल लेता हूँ हमारी सुपर चैट वाले मेंबर की। पहला वाला लेट मी आंसर, ईसाक और सोलंकी। ओह, genuinely very tough because ईसाक का बोलो। ही स्टार्टिंग बाय द वे, इसाक, तो हाँ ओके, ईसैक का पॉजिटिव ये है कि विला हैव अ हाई लाइन, और ईसैक एंड गॉर्डन दोनों काफ़ी पेसी हैं, तो डेफिनेटली स्कोर कर सकते हैं। ऑल्दो विला अपने होम पे है, विला पार्क में, दे आर नॉर्मली वेरी गुड, बट अगर कोई गोल स्कोर करेगा न्यूकासल से तो आई थिंक मनन यू वुड एग्री इट्स ईसैक, सो ही इज़ अ गुड ऑप्शन। या बट इवन सोलंकी, वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स इन द प्रीमियर लीग, द टॉप स्कोरर इन द प्रीमियर लीग, आई थिंक I would back him to score in this match as well. So it's literally a coin toss. मैं जेन्युइनली पिक नहीं कर सकता, बट अगर मेरे को करना होगा जस्ट एज टूवर्ड सोलंकी अ लिटिल बिट मे बी। या सेम, लॉर्ड सोलंकी। कैप्टन साका और केडीबी, I don't like Saka at all as a pick, but the problem is the problem is कि तभी तो रक्षित ने मेरे लिए क्वेश्चन छोड़ा है साका वाला पे, but KDB might not start यार, तो there's this factor, तो I'll say Saka, but you'd agree रक्षित, KDB का मिनट्स का इशू है, राइट? तो आई वुड गो केडीबी, you'd go KDB? या आई थिंक, I mean, even if he's playing for आई like थिंक ही स्टार्ट्स। 20 minutes, even if he या plays for like 20 minutes, he's the one that, you know, impacts. साका ने किया क्या है लास्ट 6 7 8 गेम वीक में? आप लिटरली मुझे जाके तो देखो पता उसकी है, हिस्ट्री, क्या किया है साका ने, मतलब उसने फेमस लास्ट पेनल्टीज वर्ड्स, उसने पेनल्टीज famous, दी हैं सबको, पेनल्टीज पेनल्टीज भी बांटी बांट लोगों रहा है, को। एज अ क्रिएटर खेल रहा है, डीप आ रहा है थोड़ा, बट गोल थ्रेट थोड़ा कम है। आई स्टिल फील ही इज द मोस्ट लाइकली गोल स्कोरर फॉर आर्सेनल, बट इट्स नॉट अ गुड साइन कि लास्ट मैच में उसने 5 गोल आर्सेनल स्कोर करे एंड साका गोल असिस्ट भी नहीं था, सो दैट इज नॉट अ गुड साइन। ही इज नॉट yeah. सेंट्रल टू व्हाट आर्सेनल आर डूइंग अटैकिंग वाइज, व्हिच इज कंसर्निंग।
ओके यहाँ पे एक फटाफट हम सुपर चैट वापस हम ले लेते हैं हमारे मेंबर की एंड वो बोल रहे हैं कि सजेस्ट ट्रांसफर्स टू माय टीम रैंक, मतलब 2 फ्री ट्रांसफर इनके पास बचे हैं और मनन भाई, रक्षित भाई, ये टीम है एरोला एंड राया है इनके पास, स्टुपिनान, सलीबा, पेड्रो पोरो। डिफेंस लुक एब्सोल्युटली सॉलिड मैन, देयर इज नथिंग दैट यू नीड टू बी, मेरे हिसाब से तो रक्षित भाई, मनन भाई, आई डोंट थिंक सो डिफेंस में कोई चेंज करने की जरूरत है बिकॉज फिक्चर्स भी बहुत अच्छे हैं। आर्सेनल, स्टुपिनान इज लाइक अ लॉन्ग टर्म पिक, पेड्रो पोरो इनफैक्ट ऑफ कोर्स ब्रेनफोर्ड, एवर्टन, ब्राइटन, वुल्व्स, मतलब और क्या फिक्चर्स चाहिए आपको। साका, फोर्डन, पामर एंड बोवेन बैंग ऑन है। साका पे अगेन जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी, साका पे आपने कैप्टेंसी थोड़ा ज्यादा रिलाई करा और उसी वजह से आपको शायद पॉइंट्स नहीं मिले, बट मे बी साका कुड बी वन ऑफ द प्लेयर्स दैट यू, और साका से मेरे को याद है सन विल बी बैक इन द नेक्स्ट गेम वीक, राइट? लाइक मोस्ट लाइकली, लाइक सन सन मतलब विल बी दिख तो बैक। रहा दे है आर अभी, लूजिंग करंटली इंजरी अभी, टाइम हाँ चल तो रहा है अगेंस्ट सऊदी, हाँ सो इट लुक्स लाइक ही माइट बी बैक, या तो बट इस गेम वीक के हिसाब से तो नहीं, बट हम्म साका पे आप देख सकते हैं और आगे आपके पास है वुड, अल्वारेज और सोलांकी। मतलब आई थिंक इट्स जस्ट दैट यू हैड अ बैड गेम वीक भाई, 55 पॉइंट्स आपको मिले एंड बेंच पे आपके पास है गुस्तो, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड मैन और साला भी, तो इट इज जस्ट आई वुड से अ बैड गेम वीक दैट यू हैड। ओके, मैं अपनी फटाफट यहाँ पे टीम दिखा देता हूँ एंड ऑफ कोर्स मनन भाई एंड रक्षित भाई हैं तो एक्सपर्ट भी हैं हमारे पास विद ऑल द स्टैट्स ऑन द टिप्स। यहाँ पे मैं अगेन एरोला को स्टार्ट कर रहा हूँ अगेंस्ट बॉर्नमथ, पेड्रो पोरो, एस्तुपिनान एंड एलेक्स मोरेनो, बैक थ्री। मनन भाई, रक्षित भाई, any suggestions that you would offer or is it good? I think fixtures wise they look very mouth watering to me, तो मैं इस पे चेंजेस तो मैं नहीं करूंगा। Rest I have Odegaard, Palmer, De Bruyne, Diego Jota and Ward-Prowse. हम्म सिर्फ ओडेगार्ड ने ही लास्ट गेम वीक ब्लैंक करा, ऑल्दो आई स्टिल डोंट नो, इट वाज 5-0 एंड हाउ कम नो साका एंड नो ओडेगार्ड वर ओडेगार्ड, ऑन द या टीम शीट, मतलब crazy man, इट वाज, आई डोंट that's नो how मैन, FPL लाइक is, yeah. it would have been such a perfect, they ruined everything man, like my entire team would have given me points in the last game week, but this, क्या बोलूं मैं। उसके बाद है आगे मेरे पास वॉटकिंस, टोनी एंड जाओ पेड्रो एंड ऑफ कोर्स मैं अभी यहाँ पे एक स्विच करने वाला हूँ बहुत जल्दी एंड गेब्रियल की न्यूज आई कोई अभी, इज देयर एनी गेब्रियल न्यूज? ही yeah, इज yeah, मोस्ट Gabriel लाइकली आउट starting. राइट? No, They are saying he Gabriel is स्टार्टिंग, starts, starting. Yeah, yeah, they are saying he they are starts. saying. Hmm. कहाँ पर आई है न्यूज? मैं जब अभी एक गेब्रियल OG, FPL, let's talk FPL एंडी ने बोला तो हाँ, let's talk FPL is the biggest he Twitter is, account, so हाँ for FPL तो मतलब yeah. as मैंने far अभी as he knows, शायद स्ट्रीम से पहले देखा था तो उसमें लोग बोल रहे थे इट्स 50-50 फॉर गेब्रियल। you should assume कि he starts. Yeah, शुभ, हाँ he मतलब should इट्स assume. आर्सेनल एट द एंड ऑफ द डे, तो मतलब अगर कोई प्लेयर अनसर्टेन है तो मतलब वो डेफिनेटली स्टार्ट कर रहा है एज पर व्हाट द टेम्पलेट हैज बीन Yeah, गिवन बाय That's true, that's true, एज बाय आर्टेटा। yeah. that's true. एक और सुपर चैट को मैं फटाफट एड्रेस कर लेता हूँ। गाइस, आई रियली वांट टू बाय जोटा एंड सेल बोवेन 25 डबल, Bowen 25 double, but problem I'm facing is 26 and 29 game week blank. When Salah comes back, he won't be lucrative. क्या करूं? I think Rahul, इस particular game week के लिए you can hold. I'll tell you why. Because Bowen एक तो has a good fixture, which is Bournemouth at home, which is a very good fixture, and Jota has Chelsea. I know कि Chelsea are not the same this season, but most importantly 25 का game double game week confirm नहीं हुआ अभी तक, and जब तक official confirmation नहीं आता तब तक we cannot be 100% sure कि double game week होएगा भी या नहीं. So maybe the news comes in the next couple of days. So this is probably a transfer you can make next week. Yeah, Madison completely or agree. Richarlison? Madison Uh, won't start. Richarlison most likely won't Madison start. has not played in Yeah, like 2.5 months, so आएगा भी तो off the bench आएगा yeah. Richarlison. Deepak, Haaland is not fit to start as per what lazy FPL is saying. And again, हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी कि he has been very few times he's been wrong. But okay, मैं यहाँ पे अपनी टीम दिखा देता हूँ and I am most likely planning to play João Pedro above of Watkins, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि शायद I think João Pedro is just too, मतलब, and again like they are playing away, मतलब Luton Town home has been like a fortress right now, but I just feel that is a more mouth-watering fixture. João Pedro last game week में I think he blanked, he's been blanking in the last 2 game week, but I think Luton Town away, João Pedro, it's too good to be ignored. And Gabriel को भी मैं अगर लेके आता हूँ अंदर, but he's, I don't know man, like where do I put him? Madan bhai, Rakshit bhai, are you like, No, you do you, can't put him anywhere.
actually. I don't Even think if so, he's actually. fit and he starts, it's very difficult. Probably Moreno, but मैं खुद Moreno over Gabriel खिला रहा हूँ. Same. Hmm. So Yeah. yeah, Forest away will not be that easy, I feel. So not very confident. Hmm. Not very हाँ confident. मतलब ट्रांसफर Hmm. तो देखो मेरे को करना नहीं है सीजन बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर 25 मेरे को तब स्टैक But करना है. Manan, thoughts on Watkins bench? या मेरे को वही थोड़ा सा लग रहा है कि वॉटकिंस आई प्रोबेबली आई नो ये आपको अच्छा नहीं लगेगा बट आई स्टार्ट वॉटकिंस ओवर पाल्मर personally Yeah, yeah, personally yeah, yeah. because Same. I would again do the same. Villa it is risky obviously because whatever Chelsea does Palmer ही करता है but again Liverpool have been very good this season defensively आई and at मीन home तो ऑफ कोर्स. काफी बेटर है तो मेरा बस वही था कि मुझे it can backfire obviously it can backfire but I trust Villa Hmm. Park पे Watkins over Palmer. The I only would thing probably go Palmer and Watkins over Odegaard, to be honest. मतलब ओडेगार्ड But तो it's too much money for Odegaard actually. But even Yeah, Watkins is not cheap now. cheap. It's ट्रू. very tricky. It's tricky actually it's very tricky. क्या करूं मैं, तो फंसा दिया आपने मुझे. मैं तो ये नॉर्मल ट्रांसफर करने वाला था बट भाई बहुत मुश्किल है genuinely. मैं ट्रांसफर भी नहीं कर सकता. मतलब मैं तो स्ट्रगल कर रहा हूँ कि खिलाऊं किसको. तो नहीं तो ट्रांसफर रोल तो करो ना मैं, आप, हाँ 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 बट रोल किसको करूं वही बात है ना. लाइक हु शुड आई रोल राइट नाउ. No, I mean don't make a transfer. आपके पास 1 free transfer है ना? हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना. मतलब लाइक मैं तो उसी मेरा तो यही था कि आई एम सेविंग दिस, आई एम वेटिंग फॉर गेम Yeah, वीक yeah, yeah. 25 वेयर आई कैन हैज as many players as I can. But Watkins last game week, but Newcastle home versus I think Palmer Liverpool away. मेरे को ये है कि देखो चेल्सी हारेगी तो गेम, क्योंकि as it's Liverpool away at the end of the day. But ऐसा लगता है कि यार अगर एक भी पेनल्टी अगर कंसीड मिल रही है, कुछ कर रही है, तो वो एक, चाहे स्कोर लाइन 10-1 हो, तो वो एक गोल चेल्सी का पामर से ही आने वाला है. तो हाँ इट्स नॉट लाइक आई एम लुकिंग आउट फॉर defense points or anything. It's just that I know that Palmer will be on the point sheet. That is for sure for अगेन Chelsea. दिस इज प्रॉपर 50-50 कॉल यार, गो विथ योर गट, मतलब जेन्युइनली. FPL Tony का Hmm. tweet आया है. Think KDB could be better pick than Haaland for this week. Of course. KDB starts, Oh, Haaland benched is what the ITKs are saying in the oh. news. And That is the फटाफट hottest हमारे पास information. 4 मिनट रह रहे हैं. 115 लोग देख रहे हैं आयरॉनिकली, बट जो लोग 115 लोग भी देख रहे हैं, मेक श्योर कर ले कि आप स्ट्रीम को लाइक कर दे गाइस. 115 लोग, the same amount of charges that we have, and of course आप स्ट्रीम को लाइक कर दे फटाफट. Oh, एंड man. we have just 4 minutes left. Guys, who are your captain picks? मैं पहले अपना कैप्टन बता देता हूँ. आई वॉज प्रिटी मच श्योर, बट अभी मैं डिब्रॉयन के न्यूज का ही वेट कर रहा था. इफ डिब्रॉयन इज स्टार्टिंग देन आई एम डेफिनेटली गोइंग हिम एज अ कैप्टन पिक अगेंस्ट बर्नली. Like he will be probably on the score sheet one way or the other. Um, what about you guys? आप लोग किसके साथ जा रहे हो, मनन भाई, रक्षित भाई? Man, I'm I'm going with thinking कि लाना नहीं I'm लाना going है. with Foden. I think प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं KDB लाया तो फिर मैं हालैंड नहीं ला पाऊंगा. That is the problem. Hmm. And that is why Hmm. I'm just rolling with Foden and yeah, overall टीम के लिए वैसे भी KDB होना is a good thing for any of your attackers, city attackers, क्योंकि वो इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी लाता है. तो I'm happy with Foden captain. And And I रक्षित am भाई? going Alvarez, especially after this news, because अगर Haaland start नहीं कर रहा है, then Alvarez starting के chances तो definitely बढ़ जाते हैं, because he's going to play as the striker. And अगर KDB feed करेगा उसे, तो I'm even more confident. So Alvarez for me. यार एक्चुअली मैं, पता है, अभी एक लास्ट और वो चीज सोच रहा हूँ. आई एम प्लानिंग टू बेंच टोनी, आई थिंक फॉर दिस गेम वीक. बट विच प्लेयर शुड आई पिक? शुड इट बी पामर और शुड इट बी गैब्रियल? Because Guys, it's Son not. might be in the tournament because Korea have scored in the 99th minute. Holy Oh, shit, crazy, man. crazy. Son Crazy might things, not be भाई, coming crazy back. things. अरे यार, Crazy. ओडेगार्ड टू सोन This is the करना था inside. यार. This is the inside you get pre-deadline, man. Yeah. On FPL Panchayat. Yes. एक्सक्लूड गाइस. लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड फैंसी पीडिया को भी लाइक एंड सब्सक्राइब. डॉक्टर विनय वर्मा की एक और सुपर चैट है. लास्ट के 2 मिनट रह रहे हैं गाइस. माय सेकंड कैप्टन टीम क्रेजी वन, रिचार्लिसन और जाओ पेड्रो फॉर कैप्टन. क्या क्या लगता है मनन भाई, रक्षित भाई? और मैं फटाफट अपनी टीम के फाइनल चेंजेस कर देता हूँ. Richarlison in between them and Estupinan in defense. I think, yeah.
If Gabriel is Make changes, started. guys. 1 minute बाकी है. Manan, would you play Gabriel over Alex Moreno if you have Gordon also playing? Yes, I'd hedge. I don't like to hedge my bet. I like to go all in. So yeah, probably yes. So should I play Gabriel over Moreno? Yeah. Look at your predictions, Rakshit. Did you predict a So clean I think sheet? मैं तो close कर रहा हूँ इसको. I am closing this as my final. Palmer goes on bench against Liverpool. No. Yeah, why do I still feel I'm gonna regret this decision? I don't know, man. I Am I think you gonna? will. I think you will. I'm not sure about Palmer. I think you'll regret the Tony decision. Tony against Spurs. Spurs away hai, and Spurs have been good, right? Spurs have been good, yeah. Yeah. It's a literal Like guess. defensively अगर मैं बात करूँ तो. Defensively, the Spurs have been poor. So definitely you should play every attacker against Spurs. For sure. So play Tony. Against whom? In place of Gabriel or Moreno, prefer attackers over defenders. Go with your gut, Pranay. Go with your gut. चलो let it होने be वाला यार. टाइम होने वाला टाइम Guys, हो गया, I जल्दी think. जल्दी स्ट्रीम को लाइक हो कर गया दो. चल हो गया सेव ही guys, नहीं this किया. is it. सेव किया प्रणय उसको. नहीं, मैंने पिछला मैं जो है हो गया बस. अब ठीक है guys, टाइम है सब. जब जो होना था सो हो गया भाई. मतलब ठीक है. क्रेजी सीन हो गया भाई. आई थिंक 30 मिनट वाली डेडलाइन कुछ ज्यादा क्रेजी रहती है rather than doing the 1 hour one. But फाइनल चीजें हमने ले ली यार. आई थिंक सबके लॉक्ड एंड लोडेड, स्ट्रीम लाइक्ड, हॉटस्टार रिचार्ज, ऑल सेट फॉर द गेम वीक भाई. ये दिस इज द एटीट्यूड मैन आई लाइक अबाउट विनय भाई. विनय यार तू ही ओजी है भाई सच में. एंड और कुछ क्वेश्चंस हमारे पास थे जो कि अब तो कोई फायदा नहीं है, बट लेट्स जस्ट टेक 1 or 2 क्वेश्चंस एंड रैप दिस. फोर्डन, अल्वारेज, डी ब्रुयने रखना दिक्कत कर गया. कैप्टन किसको रखूं? आई थिंक वी ऑल हैव मेड आवर डिसीजन. All 3 people in this panel have went with Man City captain, and तीनों अलग-अलग captain भाई. De Bruyne, Alvarez and KDB. Foden, Alvarez. awesome man. So triple attack from Man City, and ठीक है. अगर कहीं पे भी अगर points मिल रहे हैं तो वो यहीं पे बर्नली ही जीत है. रही है. यहीं मिल रहे हैं, बर्नली यहीं मिल 1-0 जीत रही है. Not until De Bruyne comes and like he scores. De Bruyne in, let's go भाई. I hope सभी ने अपनी टीम यहाँ पे लॉक इन कर ली होगी. 11:30 and 1 PM we have the first kickoff, which is Nottingham Forest against Arsenal. और उसके बाद आज मतलब 5 गेम्स है ना. पहले आज एक डेढ़ Yeah. मतलब सुबह उठोगे तो you'll have all the points. Fulham is playing, Everton is playing, Luton against Brighton, Crystal Palace against Sheffield United, Aston and Newcastle as well, which will be a very late kickoff at 1:45. But yeah, I think guys आप लोगों को काफी मजा आया होगा. अगर आपको मजा आया तो स्ट्रीम को लाइक कर दो, फैंसीपीडिया एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो. हम आपको मिलेंगे अब रिव्यू स्ट्रीम में. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू मनन भाई, रक्षित भाई. मैं भी जरा कोरिया वाला मैच देख लेता हूँ. थैंक यू guys. Take care and enjoy the game week. Bye Bye guys.